Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope all of you are very fine and staying very safe and sound at your homes. So, class 4, it's your English lecture, and as you know that as per the government notification, our school are closed, but we won't stop our studies. Don't worry, we will continue. We are going to continue from where we left. जहाँ से हमने स्कूल में छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे एंड थ्रू दिस वीडियो लेक्चर्स वी आर गोइंग टू कंप्लीट आवर syllabus. Okay, so don't worry, these video lectures will be really helpful for you inshallah. So let's start our first lecture, which is on 6th September 2021, and it's Monday. Okay, welcome to your first lecture, and it's about your chapter number 5, which we have read in the class. Patrick, who did Patrick's homework? Yes, we have already done its reading, and now we are going to find its words meaning. Yes, so you all have to open your receiver copies and you have to bring your dictionaries in your hands. So let's begin. Okay, have your pencil, eraser in your hands. Write the date and date, and then write the chapter name on the top, and then write words meaning in one column, and in the third column write meaning. Yes, Urdu meanings, which you will write meaning. आप लिखेंगे यहाँ मैंने लिखा Urdu meanings, आप लिखेंगे meaning. ठीक है? So these are some words, 1 2 3 4 5 6 7 words, and you have to find the meanings in your dictionaries. Yes, I have already told you that how you have to find your meanings. So the first word is grabbed. Okay, so it's the second form of grab, right? Grab means पकड़ना. ठीक है, तो grab जो है सेकेंड फॉर्म है और grab फर्स्ट फॉर्म है. ठीक है, तो आपको हमेशा डिक्शनरी में फर्स्ट फॉर्म में ही वर्ड मिलता है, तो आप grab देखेंगे, नॉट grabbed. ठीक है, फर्स्ट फॉर्म है grab, तो आपको इसका मीनिंग मिलेगा. ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑफ grab एंड यू विल फाइंड जहाँ ग्रैब का इंग्लिश मीनिंग होगा वहीं उसका उर्दू मीनिंग भी होगा. ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज एल्फ. एल्फ होता है छोट बोना. ग्लिच होता है मसला, कोई छोटा मसला. सरप्राइज होता है हैरान होना. फिर मिस्ट्री होता है कोई राज. देन विच इज विच चुड़ैल को कहते हैं. देन येल्ड मीन्स चीखना. अब येल्ड भी देख सकते हैं, दैट येल इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ येल. ठीक है, सो आपको डिक्शनरी में येल मिलेगा, नॉट येल्ड. ओके, सो गुड लक. Find these words very carefully in your dictionaries, और आपको बड़े easily मिल जाएंगे. आपने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द पैटर्न डैट जिस तरह ग्रैब्ड है तो आप जी में जाएंगे और GRA में देखेंगे. ठीक है, जिस तरह एल्फ है उसमें आप EL में देखेंगे. ठीक है, सो फाइंड दिस मीनिंग्स एंड देन राइट इन योर सीवर कॉपीज. देन ऑन द सेकेंड पेज you will make sentences, and I have given you some words for sentences here. You have to make very good sentences here. Okay, so I'll tell you the meanings of these words. Homework means आपको पता है घर पे जो काम मिलता है आपको वो करना. Yell means चीखना. Elf means छोटा आदमी बोना. ग्लिच मीन्स मसला. और चोर्स होते हैं छोटे छोटे काम. ठीक है, छोटे छोटे काम कोई घर के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं. चोर्स मीन्स कहते हैं छोटे कामों को. सो यू हैव टू मेक सेंटेंसेस ऑन द सेकेंड पेज. फर्स्ट यू विल राइट द वर्ड्स मीनिंग एंड देन you will write the sentences. So this is about this lecture. Now in the next lecture inshallah we will do the question answers. So I hope you will make very good sentences and find the meanings very carefully. Okay, so this is our lecture number 1. Now you have to ready the pages, and you all have to start finding the meanings. Okay, so do it very carefully. Good luck for this, and hopefully when school will be opened I will check your work which you will do in these holidays. इंशाल्लाह सब चेक हो जाएगा, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी. आप बस काम करें अच्छे से, केयरफुली, ध्यान से, अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा करके, and inshallah it will be checked soon, very soon. So good luck my class, take care, and I will meet you in our next lecture. Till then, take care. Allah Hafiz.